Hello, in this section we are going to learn about the electric generators. Okay, so let us learn about this electric generator in this section. And here we can have here. Okay, let us learn about the electric generator in this sections. So what do you mean by electric generator? Okay, so electric generator means here we have to supply what mechanical energy. So we need to supply mechanical energy. So this mechanical energy should be converted to the what? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करके हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना है तो इसलिए ये डिवाइस का नाम है जनरेटर ठीक है व्हाट वी वांट टू जनरेट वी वांट टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द mechanical energy. What is mechanical energy here? I told mechanical energy means push or pull of an object. So push or pull ठीक है हम लोग क्या करेंगे हम लोग रोटेट करेंगे so we have to rotate the coil ठीक है we have to rotate the coil in particular directions and then this is called as push ठीक है we are pushing the coil or we are rotating the coil in a particular direction so this leads us to help okay this help us to what supply the what mechanical energy so we are pushing this coil in the upward direction so ab here we have ab side and cd sides so we need to push this coil or rotate this coil okay in the presence of the magnet and then we need to see the effect तो इसलिए मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग क्या कन्वर्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इसे जनरेटर बुलाते हैं ठीक है so this is a electrical generator definitions so now what we have here so let us tabulate like what is present here so there is a magnets north pole as well as one south pole so there is a what rectangular coil and there are two split rings there are two full rings not split rings so there are two full rings r1 and r2 are the what full rings so let me write here so there are magnets there is a what magnet and there is a what rectangular coil so there is a rectangular coil and there are what full rings or we call them as slip rings then we had here okay one galvanometer is used so one galvanometer is also used and there is a what one more so we have brushes b1 and b2 so this is the arrangement so now what we need to do we need to understand this so there are two magnets in between the two magnets so in between these two magnets there is a coil arranged and these coils is connected to the rings okay rings and which in turn is connected to the axle so with the help of this brush okay b1 so there is a ring r1 full ring or we call it as slip rings so r1 and r2 are the slip rings b1 and b2 ब्रशेस है ठीक है इससे कनेक्शन देने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं सो बी वन एंड बी टू आर कनेक्टेड टू द external circuit and in the external circuit what we have so we had what galvanometer this is a diagram of galvanometers so we need to understand how this generation of electricity works ठीक है तो हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे so we will try to understand this so what we can have is that we had like generator का वर्क क्या था so generator will generate electricity okay from the mechanical energy से हम लोग क्या जनरेट करना चाहते हैं ओके इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम बनाना चाहते हैं सो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है ठीक है हम कैसे करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं मान लेते हैं कि हमारे पास एक कॉइल है सो वी हैड दिस कॉइल ओके दिस इज अ coil and here we connected this to the galvanometers one end is connected to the galvanometer and now we will take bar magnet like that
हमने एक बार मैग्नेट लिया हुआ है नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला। तो हम लोग गैल्वेनोमीटर को एक स्टेशनरी पोजीशन पर रख देते हैं, और ये वाला जो मैग्नेट है इससे हम लोग क्या करेंगे, मोशन करने लगेंगे, मतलब मूवमेंट ऑफ दिस मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल। तो हम लोग मैग्नेट को मूव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉइल। तब क्या देखने के लिए मिलेगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा, डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा। डिफ्लेक्शन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन गैल्वेनोमीटर, ऑब्जर्व्ड इन गैल्वेनोमीटर। तो ये प्रिंसिपल होता है, ठीक है। दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, जनरेटर। ओके, जनरेटर का प्रिंसिपल लिखो अगर बोलता है तो हमको एक वर्ड में लिख सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। सो दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, सो इफ अ कॉइल इज मूव्ड रिलेटिव टू द मैग्नेट, ओके, so relative motion between the what, coil, and the relative motion between कॉइल, एक कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन क्या प्रोड्यूस कर सकता है, ईएमएफ इंड्यूस कर सकता है, ठीक है। वुड रिजल्ट इन, ये इसके वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, वुड रिजल्ट इन इंडक्शन ऑफ ईएमएफ, ओके, इंडक्शन। तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन यही होता है कि जब भी हम लोग मैग्नेट को मूव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉइल, देयर इज अ व्हाट, so EMF is generated in this coil, and this can be seen, okay, with a deflection in the galvanometers। तो ये this is the principle of what, generators। तो अब हम लोग देखते हैं कि how it is working now। तो हमारे पास एक बेसिक डिजाइन था, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैड दिस टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, one is north, one more is what, south। so there is a rectangular coil in between again। तो इस कॉइल को हम लोग वन एंड को कनेक्ट कर देते हैं फुल रिंग से, और एक एंड को भी हम लोग कनेक्ट कर देते हैं और एक फुल रिंग से, ठीक है। देर आर टू फुल रिंग्स, सो वन इज R1, वन मोर इज R2। सो देर इज अ एक्सल इन बिटवीन। तो यहाँ पे एक्सल भी हमको दिया हुआ है। तो देर इज अ व्हाट, एक्सल इन, एक्सल लाइक दैट। तो दिस एक्सल कैन बी रोटेटेड मैकेनिकली। तो आप इसको एक होल्डर भी बना देंगे, तो यहाँ पे से हम रोटेट कर सकते हैं मैकेनिकली, इसको घुमा सकते हैं, ठीक है। वी कैन रोटेट दिस, एंड देन दिस इज अ व्हाट, अ रिंग। Okay, this is our ring, so I will color it a bit different। So this is what, our ring। So this green color is a ring, let me assume। So so this connection can be given with the help of brushes। तो दोनों तरफ भी brushes से connection हमें दिया हुआ है। So let me assume like that। And external circuit is also connected with the what, so there is a what, galvanometer in the external circuits। तो ये हमारा हो गया connections। एक को ले लेते हैं, so B1 ब्रश, और एक को ले लेते हैं B2 ब्रश। तो हमने हमें क्या करना है, पहले मैकेनिकली रोटेट करना, मतलब हम लोग इसे घुमाएंगे, इस एक्सल को घुमाएंगे, ठीक है। वी विल रोटेट दिस एक्सल इन दिस डायरेक्शंस। तो ये जब एक्सल घूमेगा, so when the axle is rotating in a particular direction, what happens, so there is a what, when the axle rotates, okay, now let me assume this end is moving upward and this end is moving downwards। So then whenever the coil, so this coil, rectangular coil, okay, this rectangular coil is changing its position with respect to the magnet। So there is a change in the magnetic field with respect to the coil, so it leads to the what, induction of current। मतलब ये कॉइल का जो रिलेटिव मोशन होता है इस मैग्नेट के रेस्पेक्ट के साथ, मैग्नेट को स्टेशनरी रखा हुआ है, कॉइल को मूवमेंट कर रहा हूं, तो इसमें क्या हो जाएगा, so there is a induction of current in this coil। Okay, so current in this coil, let me assume, so current is induced in this direction। ओके, सो इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो चुका है, ए बी सी डी डायरेक्शन में। तो करंट फ्लो हो रहा है ए बी सी डी से होकर B2 से लेकर एक्सटर्नल सर्किट में चला जाएगा, B2 से लेके B1 की तरफ। तो स्टार्टिंग में करंट फ्लो हो रहा है B2 से लेकर B2 टू B1। ओके, B2 टू B1 स्टार्टिंग में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है।
उसके बाद हाफ रोटेशन के बाद हाफ रोटेशन के बाद ठीक है, सीडी वाला एंड इस तरफ आ जाएगा. सो लेट मी assume that this is now north and this is what, south. So after this rotation, what happens? So there is a two ends. Okay. So पहला एंड में, so what we can have, so we can have it like, earlier the current was flowing, now we will take this part as DC, like DCBA. Okay, DCBA. So now the current will flow like okay. So now current will flow in the direction of DCBA because it is already in the upward direction, so it is in the downward direction. We can find this direction with the help of what, so current direction. Okay, induced current direction हम किससे find कर सकते हैं? Induced current direction हम find कर सकते हैं induced current direction with the help of Fleming's right hand rule. Fleming right hand rule से हम induced current का direction find कर सकते हैं. ठीक है, induced current. So induced current direction is in the what, AB, and earlier, so now it is in the end of DC. So now earlier the current was moving from B2 to B1. Now it will move from what, B1 to B2. Okay, now it will be like B1 to B2. तो current का direction change हो चुका है. So after half rotations, so now the current is flowing like B1 to B2 after half rotations. तो ये हो रहा है, ठीक है, after half rotation. So therefore current is changing for every half rotations in the, by using the full rings here. So therefore it is a what, AC generator. This is the example of AC generators. तो AC generator से हमने current induce कर दिया है एक coil के अंदर. This is total working about the what, AC generator now. So if you have any queries, you can ask us at any times. So thank you for watching this video and hope your day is best.